गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 2022 रिजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। तो G7 कंट्रीज़ ने अलॉन्ग विद इंडिया ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट लॉन्च की है रिजिलिएंट डेमोक्रेसीज नाम से। अब इसके अंदर जो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो इसमें कहा है कि आपको फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, डाइवर्सिटी जो सिविल सोसाइटी की है उसको गार्ड करके रखना है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है वो बचाना है। तो इसके अंदर सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट राइट नहीं माना गया है, बट इसके अंदर ये भी कहा है कि कुछ हाइब्रिड थ्रेट्स हैं, जैसे डिसइंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, फेक न्यूज़, ऐसी चीज़ों को जो है काउंटर करना भी इम्पॉर्टेंट है, और वो स्टेट के पास सोवरन राइट है कि उसको वो काउंटर करने के लिए एक्शन ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जर्नलिस्ट अगर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और या फिर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ उन जर्नलिस्ट का यूज़ करके डिसइंफॉर्मेशन आपकी कंट्री में फैला रही है, तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उसमें इसी स्टेटमेंट में कहा है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे हाइब्रिड थ्रेट्स भी आ रहे हैं जिससे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो उसके लिए जो है फॉरेन जो मलाइन फॉरेन इंटरफेरेंस है, या कोई रिप्रेशन जो है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रहा है उसको, जो कि जिससे कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सोसाइटी के ख़िलाफ़ या फिर मीडिया के ख़िलाफ़ एक अंडरमाइन कर सकते हैं उस ट्रस्ट को, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट के पास सोवरेन राइट है टू डील विद इट। ठीक है। फिर इसमें उन्होंने बोला है कि आपको सोशल कोहेशन, सॉलिडारिटी और इंक्लूजन जो है सारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है वो इंश्योर करना है। तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट लॉन्च किया गया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लोर टेस्ट। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया था वो नहीं कर सकते एटलीस्ट टिल जुलाई 12। और जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गवर्नमेंट की जो ये एक आर्गुमेंट था कि आप फ्लोर टेस्ट मत होने दो, उसको भी जो है वो कोर्ट ने नकार दिया है। तो मतलब फ्लोर टेस्ट करवाया जा सकता है। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है। तो फ्लोर टेस्ट से ही पता लगता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी इन्जॉय कर रही है लेजिस्लेचर में या नहीं कर रही है। ठीक है। तो अगर तो सिंगल पार्टी है तब तो पता ही लग जाता है गवर्नर को कि यस, ये पार्टी जो है वो मेजॉरिटी इन्जॉय कर रही है। लेकिन अगर सिंगल पार्टी नहीं है, कोई कोalition है और मेजॉरिटी क्वेश्चन में है, तब चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आओ और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो कि यस, आपके पास मेजॉरिटी है। अगर खासकर समझ लो एक से ज़्यादा पार्टी से ज़्यादा जो हैं किसी स्टेट में, एक पार्टी से ज़्यादा जो हैं आपके मेंबर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने का, तो उस केस में गवर्नर जो है वो एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं और देखते हैं कि किसके पास मेजॉरिटी है। ठीक है। अगर जो सीएम है वो सीएम जो है वो मेजॉरिटी प्रूव करने से फेल हो जाते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है आर्टिकल 164 के अंडर, जिसमें सीएम को जो है गवर्नर कहते हैं कि आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी देयर आर डाउट्स कि आप जो है मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हो। तो अगर तो हाउस सेशन में, फिर तो स्पीकर जो है वो अथॉरिटी होता है फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर असेंबली सेशन में ही नहीं है तो गवर्नर के पास वो राइट होता है अंडर आर्टिकल 163। तो जैसे अभी का जो कंटेक्स्ट है, तो अभी असेंबली सेशन में तो नहीं है, तो इस टाइम गवर्नर के पास राइट है कि ये देखने का, ये असेंबली सेशन को बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाने का। तो एसआर बोम्मई केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि रादर दैन सीधा ही आप जो है आर्टिकल 356 जो है आपका सेंट्रल रूल लगाने का स्टेट में यूज़ करो गवर्नर के थ्रू, उससे पहले आपको फ्लोर टेस्ट करवा के देखना है कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तरह से अगर अभी मेजॉरिटी ये फ्लोर टेस्ट करवाने को कहते हैं गवर्नर, तो एक तरह से एसआर बोम्मई केस की ही जो जजमेंट है उसकी कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे वो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आपको पता है कि ये हमारा ओपन सोर्स जो है, एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है वो अप्रैल में ही लॉन्च कर दिया गया था, ताकि जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जो है वो डेमोक्रेटाइज किया जा सके। तो एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी और इसमें लोकल डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़ जो है उनको
जुड़ने का मौका दिया जाएगा। ना तो ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है और ना ही कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें जो आपके एग्जिस्टिंग डिजिटल कमर्स एप्लीकेशन है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये तो सिर्फ चलो ई कॉमर्स में है, बट इवन स्विगी, जोमेटो, ये सब भी जो है अपने आप को ऑन बोर्ड कर सकते हैं वॉलंटरली और इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जब आप समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी आप अमेजोन पे जब कुछ सर्च करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपको सिर्फ वही सेलर्स दिखाता है ना कि जो अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, वो आपको फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड सेलर्स तो नहीं दिखाता। लेकिन जब ONDC आ जाएगा तो एक तरह से सारे सेलर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, ONDC के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप चाहे फ्लिपकार्ट पर जाओ, चाहे आप अमेजोन पर जाओ, आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, तो वो आपको सारे सेलर्स जो है वो दिखाना शुरू करेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो कि एक ओपन सोर्स मेथड है, उसका सक्सेस जो है वो डिजिटल ई कॉमर्स पे भी लाना चाह रही है। तो ये सिर्फ रिटेल सेक्टर ही नहीं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि मोबिलिटी, आपका जो ओला, उबर, फूड डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो, इन सब को भी जो है वो एक तरह से एक ही जगह पर इकट्ठा कर देगा। तो अभी इस प्रोग्राम को सिर्फ 5 जो है सिटीज़ में पायलट स्टेज में चलाया जा रहा है, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर में। और टारगेट ये है कि कम से कम 150 रिटेलर्स जो हैं वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड कर लिया जाए, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स यही है कि स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, आपके जो एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है, समझ लो अमेज़ोन के पास कुछ सेलर्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस है, वो सेलर्स जो हैं वो आपके फ्लिपकार्ट पर नहीं बेच सकते हैं, या फिर इवन जो बड़े सेलर्स हैं सिर्फ उन्हीं के वो ही जो है पे आपके अमेज़ोन तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा और स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन कर दोगे तो कस्टमर सर्विस और पेमेंट की इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विलिंग होंगे, क्या अमेज़ॉन विलिंग होगा कि वो अपने सेलर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और अपनी एक तरह से डेटा को, जो डेटा वो कलेक्ट करता है उस सिस्टम को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और फ्लिपकार्ट को भी जो है वो एक्सेस दे दे अपने सेलर्स का, या फिर उनके सेलर्स का एक्सेस ले ले, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ इश्यूज़ हैं, उसको जो है वो वीड आउट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वाइल मेकिंग दिस ONDC सक्सेस। सो ये कुछ इश्यूज़ और बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेजिव वीड्स। तो एक विटामिन D3 रिच वीड भी हमको देखने को मिला है अमंग ऑल द 18 इन्वेजिव प्लांट जो हमें देखने को मिले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में। तो ये लिस्ट जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निकाली है। तो इसमें बहुत सारे आपके इन्वेजिव वीड्स देखने को मिल रहे हैं, पार्थेनियम, लैंटेना, इपोमोया, मिमोसा, पार्थेनियम, लैंटेना, ठीक है। उसमें से जो सेस्ट्रम डायोरनम नाम का जो वीड है वो आपको विटामिन D3 का जो है वो सोर्स हमको देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इनकी जो बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा इसके जो है वो टॉक्सिसिटी है। तो हमारे जो बेनिफिट्स हैं उससे ज़्यादा इसमें टॉक्सिसिटी है, तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये लिस्ट निकाली है तो वो क्या है। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज और एडवाइजरी देता है वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट में। वाइल्ड लाइफ रिसर्च बहुत सारे एरियाज़ में करते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी एट्सेट्रा, ये सारे फील्ड में रिसर्च करते हैं। 1982 में इनको बनाया गया है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर, और इनका इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में बेस्ड है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है BRO कैफ़ेज़। ये ब्रो कैफ़ेज़ नहीं है, BRO कैफ़ेज़ है। तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया है कि जो वे साइड अमेनिटीज़ हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, इनको BRO कैफ़े कहा जाएगा। 75 लोकेशन 12 जो है इनको अप्रूवल मिला है 75 लोकेशंस में, 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। अब इसमें होगा क्या कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर BRO लाइसेंस देगा ताकि डिज़ाइन, बिल्ड और ऑपरेट मेथड पर जो है ये फैसिलिटीज़ जो हैं रोड के साथ में मिल सकें, जैसे पार्किंग मिल सके 2 and 4 व्हीलर की, फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, सेपरेट रेस्ट रूम फॉर मैन, वीमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड। तो ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो रोड के साथ जो BRO रोड्स बनाता है बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ उस साइड मिल सके। तो ये बेसिक अमेनिटीज़ भी मिलेंगी, तो इससे क्या होगा कि टूरिस्ट को कंफर्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अप्रूवल दिया है। तो हम BRO के बारे में भी देखते हैं। तो एक्चुअली ये BRO जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंडर काम करती थी, बट 2015 में इसका जो है कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया गया, बिकॉज ये ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में ये काम कर रही है जहाँ पर जो है रोड की कंस्ट्रक्शन करना नॉर्मल जो है आपकी स्टाफ के लिए डिफ़िकल्ट है। तो ये
डिफ़िकल्ट और इनएक्सेसिबल रीजन्स में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प, मिलिट्री पुलिस और आर्मी पर्सनल जो है वो इसमें काम करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी प्रोजेक्ट चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। तो एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा का, उन जो कि फाउंडर ऑफ बेंगलुरु हैं, और वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर के प्रेमिसेस में जो है वो अनवील किया जाने वाला है। तो हम देखते हैं नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी के बारे में। तो ये 16th सेंचुरी के चीफ्टेन थे विजयनगर एम्पायर के। इनको कहा जाता है कि ये फाउंडर ऑफ बेंगलुरु हैं। ये इन्होंने जो है वहाँ पर 1000 लेक्स भी सिटी में डेवलप की थी, ताकि जो है ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए पानी का जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। तो ये साउथ कर्नाटका की वोकालिगा कम्युनिटी है, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, उनको बिलोंग करते थे, और इन्होंने ही जो है वो एक तरह से बेंगलुरु को फाउंड किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 840 स्क्वाड्रॉन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 जो हैं HAL द्वारा बनाए गए, उनको जो है वो इंडक्ट कर लिया है। तो ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट होगा जो कि अब चेन्नई में स्टेशन किया जा रहा है, और इसको जो है 3 मोर ऐसे जो है ALH जो है वो 840 स्क्वाड्रॉन में डाले जाएंगे। इन स्क्वाड्रॉन्स में जो ये एयरक्राफ्ट हैं ALH एयरक्राफ्ट जो है, इनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज डिटेक्शन, मॉडर्न रडार्स हैं, हैवी मशीन गन इसमें माउंटेड है। तो ये एक तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड को पूरे ईस्टर्न रीजन में जो है वो अपने ऑपरेशंस करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाक कर्मयोगी। तो डाक कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा अपने 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक्स और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उससे होगा क्या कि स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग कंटेंट ऑनलाइन दिया जा सकेगा, और फिर जो है बाद में उनको जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। तो बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ के लिए। So now let us see all these topics in English. So the first topic is resilient democracy statement. So India, along with G7 countries, it has launched this joint statement on resilient democracies. So the basic premise of signing this statement is to express its commitment that we will guard the freedom, independence and diversity of civil society actors, and we will also guard freedom of speech and expression and opinion online and offline. So this principle, the document is laying out the principles that we should ensure open, free, global, interoperable, reliable and secure internet, and also of course freedom of speech offline also. But it is not absolute. Freedom of speech, the right to freedom of speech will not be absolute if the state has to counter hybrid threats like disinformation, fake news, information manipulation, interference, foreign interference. Then in that case the state can act. Okay, state will be able to enforce the sovereign laws and take action against, let's suppose that a journalist is promoting fake news on the behest of some foreign country. Then in that case the sovereign country, the Union of India will have the right to take action, because these are the hybrid threats. These threats are basically utilizing the freedom of speech which has been enshrined in our democracy and using the same rights against the government of India or the Indian Union. Okay, so these people are using the rights that we are giving them, and they are using the same rights to dismember or to break up India. Okay, so countering those hybrid threats is being allowed by this document. So it is also saying that we have to build resilience so that we can act against the malign foreign interference. Of course, this is particularly talking about, or it is indirectly talking about Chinese government does that. And it also if any act or any disinformation or manipulation act seeks to undermine trust in government, society and media, then in that case the sovereign country can take action against it. Okay, of course apart from that, it is asking for promoting social cohesion, solidarity and inclusion of all members of society, both online and offline. So it is basically a document that is talking about freedom of speech and expression, but it is also talking about the exceptions to it.
Okay, so this is in line with our constitutional principles. So the next topic is flow test. So a setback has been received by the Maharashtra government because the Supreme Court of India has recently protected Shiv Sena MLAs from disqualification. Of course, you know that the Deputy Speaker disqualified these rebel Shiv Sena MLAs on spurious grounds, and the court has disallowed this disqualification and said that until July 12th, these MLAs cannot be disqualified. And the court has also denied the Shiv Sena NCP Congress coalition's request to halt the flow test. Okay, so flow test is basically a vote of confidence. CM has to prove his majority, but the Shiv Sena, NCP, and Congress coalition was asking that the Supreme Court should bar these MLAs from asking for a flow test, but the apex court has denied that request. So now, before July 12th, if the Shiv Sena rebel MLAs want, or if any other, of course, any member of the legislature wants, then in that case, flow test can be demanded, and CM will have to prove his majority. Okay, so flow test is basically done to see whether the government is in position to enjoy the support of the majority legislature. So if there is a single party, then in that case, of course, it is clear to the governor that this party is enjoying majority. But if there is a coalition, and if this majority is questioned, in that case the CM has to prove its majority using the vote of confidence. And if more than one person is claiming to form the government, then to clear the air, governor may call for a special session to see who has the majority. If the current CM, fails to prove the majority in the House, then he will have to resign. So basically, it's a constitutional mechanism under Article 164, where the CM appointed by the governor can be asked to prove majority on the floor of the House. So if the House is in session, then Speaker has the authority to call for a floor test. If the Assembly is not in session, like the current case of Maharashtra, Assembly is not session, so Governor will have to ask for a floor test under Article 163. So this is in line with the SR Bomai case judgment, where the central government was using before 1994, central governments were using spurious grounds and imposing governor rules in states. So in SR Bomai case, the Supreme Court said that you cannot impose this, misuse this Article 356. So before testing the flow, before conducting the flow test. Okay, so now if the Maharashtra governor asks the current CM to prove majority in the House, then it would be in consonance with this SR Bomai case judgment. So the next topic is open network for digital commerce. So this government of India has announced the launch of this pilot phase of open network for digital commerce in 5 cities in April 2022. So of course the aim is to democratize the digital e-commerce space, which is currently being dominated by a few large players like Amazon and Flipkart. So basically this ONDC will be a not-for-profit organization, and it will onboard several digital commerce stores or sellers on its platform, and they will have access to all the of course all the platforms. And this ONDC will not be an aggregator application, it will not be a hosting platform, but these Amazon or Flipkart, they can voluntarily choose to adopt ONDC in their systems. So what will happen is that they will become a part of this ONDC network, which will allow them to access all the sellers which have been onboarded on the ONDC. So what happens is currently is that once you are on Amazon or on Flipkart, let's suppose that you are searching for a product on Amazon, then it will only show you the sellers which have been onboarded on Amazon only. They will not show you sellers which have been onboarded on Flipkart. But after, if Amazon and Flipkart onboards on this ONDC, then all the sellers who have been listed on ONDC, they will be available to all of these platforms. So in that case, of course, if you, let's suppose, after Amazon and Flipkart onboards themselves on ONDC, what will happen is that if you search for a product on Amazon, then it will also show you the sellers who have been onboarded on Flipkart. So basically it will be
It will allow these platforms to access larger market, and it will also bring in an element of transparency, and it will also bring an element of equality. Currently what is happening is that Amazon is giving preference to some sellers while some other sellers are being dwarfed. So basically the government wants to replicate the success of unified payments interface where equality among the service providers has been ensured. And apart from just the retail sector, apart from just Amazon and Flipkart, this digital commerce will also include mobility, urban Ola, yeah, Uber, Ola, this food deliveries, Zomato, Swiggy, etc. All these will be onboarded on this ONDC platform. Okay, currently this project has been launched in just 5 cities: Delhi, NCR, Bengaluru, Bhopal, Shillong, and Coimbatore, and the target is to onboard at least 150 retailers. So benefits are of course same. ONDC will standardize operations. All the sellers will have a similar operation standard. They will have similar methods as to how they will manage their inventory, how they will fulfill the order management or order fulfillment. So basically it will standardize the operations amongst the all the sellers. But there is also a challenge, because Amazon or Flipkart currently, they what they do is that they give preference to certain sellers because they have higher margins from those sellers. But why would they onboard themselves on ONDC? Because that would cut their margin and it would democratize this entire process. And what they would have to compete in the market. If their seller is not selling the product at a competitive price, then I might be on Amazon, but I might order that product from a Flipkart seller. Okay, so that's what the problem is. And also, who would provide the customer service and payment integration in case you have purchased a product from Amazon and Amazon seller? Amazon is providing you customer service and payment gateway. But if from Amazon you have purchased a product from Flipkart, a Flipkart associated seller, how would this customer service and payment integration would happen? So there are some issues which need to be figured out before going on a full scale launch of this platform. So the next topic is invasive weeds. So vitamin D3 rich weed has been found amongst the total 18 invasive plants which have been found in Kaziranga National Park and Tiger Reserve by the Wildlife Institute of India. So certain weeds like Parthenium, lantana, Ipomoa, Mimosa, Marthenium, lantana, etc. They have been found in this area, and amongst them is this Cestrum diurnum. But of course it is a source of vitamin D3, but that they are highly toxic. So toxicity outweighs the benefit that this Cestrum diurnum provides to us. So let's also see about this Wildlife Institute of India. So it offers training program, academic courses, and advisory in wildlife research and management. So it conducts wildlife research in several of these areas like biodiversity, endangered species, etc. And it was established in 1982. It's an autonomous institution under the Ministry of Environment, and it is based in Dehradun. So the next topic is BRO cafes. So Ministry of Defence has approved the formation of wayside amenities within the border with the border or roads organization. So these will be branded as BRO cafes, and it has been approved in 75 locations of 12 states and union territories. So basically it will provide wayside amenities in a public-private partnership mode, and BRO will give the license on the basis of design, build and operate. So tourist facilities like parking for 2 and 4 wheelers, food plaza, restaurants, separate restroom, etc. They will be provided to the tourists. So basic amenities will be provided in these border areas where BRO has constructed the roads. So it will provide some certain comforts to tourists as well as generate employment for the local people. So what is BRO? Of course, it functions under the Ministry of Defence at least since 2015, because earlier it was functioning under the Ministry of Road Transport and Highways. So its aim is to construct roads in far-flung areas which are currently difficult and inaccessible, and they are near the borders. So border roads organization is constructing roads in such areas.
It is staffed by the Indian Army's Corps of Engineer, Electrical and Mechanical Engineer, etc., Army Service Corps, Military Police, etc. And they currently maintain operations in not just India but also in neighboring countries like Afghanistan, Bhutan, Myanmar, and Sri Lanka. So the next topic is Nada Prabhu Kempegowda. So a bronze statue of Nada Prabhu Kempegowda will be launched very soon on the premises of Kempegowda International Airport. So you know that Nada Prabhu Kempegowda is the founder of Bengaluru. He was a 16th century chieftain of the Vijayanagara Empire, and he conceived the idea of a new city. He even erected towers in the four corners of this proposed city, and he developed a system of 1000 lakes in the city so as to take care of drinking and agricultural water needs. He belonged to the Vokaliga community of an agriculture community which belongs to South Karnataka. Okay. So the next topic is 840 Squadron. So Indian Coast Guard has inducted Advanced Light Helicopters Mark III. This will be the first aircraft which belonging to this 840 Squadron of the Indian Coast Guard, and it will be stationed at the Chennai station of Indian Coast Guard, and 3 more ALHS will be added to this squadron shortly. So these aircrafts have the beyond visual range detection, modern radars, and even heavy machine gun, so as to cater to the needs of Indian Coast Guard in the entire eastern region. So the next topic is Dark Karma Yogi. So Dark Karma Yogi is an online an e-learning platform of Department of Posts. It is basically meant to enhance the competencies of about 4 lakh Grameen Dak Sevaks and departmental employees. So this is basically providing the trainees with the uniform standardized training content online so that they can complete their course and download their course completion certificate. So a standardized course will be developed for them so as to give them training. Okay. So basically, in a nutshell, it's a learning platform for the Department of Post employees. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.